Students, now we are going to discuss the question which is asked for 2 marks. Distinguish between isothermal process and adiabatic process. If you are going to the board papers, this question is asked for 2 marks various times. So the difference is should be written. So here isothermal process and adiabatic process is written on both sides. First side isothermal, second side adiabatic process. So point number 1. It is in isothermal process, the temperature of the system remain constant, delta T is equal to 0. The definition is that it is the process in which temperature remain constant, definitely delta T is equal to 0. Same way, you can write another point, first point in adiabatic process. In adiabatic process, the temperature of the system changes, that's why delta T not equal to 0. Because in adiabatic process, there is an exchange of heat energy between system and surrounding. That's why delta T not equal to 0. Second point related with the temperature, that is in isothermal process, as delta T is equal to 0, that's why delta U also equal to 0. Internal energy of the system remain constant because delta T is equal to 0, therefore delta U is also equal to 0. But in adiabatic process, delta U is not equal to 0 because delta T is not equal to 0. In internal energy of the system changes, delta U not equal to 0. Both the points are interrelated. In isothermal process, delta T is equal to 0. In adiabatic process, delta T not equal to 0. In isothermal process, delta U is equal to 0. In adiabatic process, delta U not equal to 0. Now we are coming to the point Q. In this process, isothermal process, system exchange heat with the surrounding, that's why Q not equal to 0. But in adiabatic process, the system does not exchange heat with the surrounding, that is why Q is equal to 0. If you are considering the boiling water, isothermal process, in boiling water, what happens? The excess of heat is coming out in the form of vapor, that's why heat is going into the surrounding, Q is not equal to 0. But adiabatic process is thermally insulated process, hot tea placed in a thermos flask. Q is not coming, heat is not coming out from the thermos flask. After that, point number 4. In this process, enthalpy remain constant, delta H is equal to 0. As it is an isothermal process, delta H is equal to 0. But in adiabatic process, the enthalpy of the system changes, that is delta H not equal to 0. And last point, point number 5. In isothermal process, the system is not thermally insulated, but in this process, that is adiabatic process, the system is thermally insulated. आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर डिफरेंस हमें लिखना है तो ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. उसके लिए कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, एक पॉइंट को आधा मार्क रहता है. इसका पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन. आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब डेल्टा टी क्या रहेगा? 0. इसके अगेंस्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज वो सिस्टम रहती है, वो मटेरियल एक्सचेंज नहीं करती, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0. सेकंड पॉइंट है इंटरनल एनर्जी का. आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 है, इसका मतलब डेल्टा यू भी क्या रहेगा? 0, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर. आज डेल्टा टी 0 है, इसका मतलब डेल्टा यू भी क्या रहेगा? 0. इन एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली डेल्टा यू नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 0. उसके बाद है क्यू. आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए जो सिस्टम है वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में छोड़ देती है. जैसे बॉइलिंग वाटर है, वाटर अगर बॉइल हो रहा है उसको नीचे से अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो बॉइल होगा, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए, उसके बाद भी उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा की जो हीट है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आती है. इसका मतलब वो सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करती है. Q नॉट इक्वल टू 0. उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करती, इसीलिए Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0. सो दैट 3 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0. इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0 इन एडियाबैटिक. Q इज इक्वल टू 0 इन आइसोथर्मल, Q इज नॉट इक्वल टू 0 इन एडियाबैटिक. उसके बाद इन दिस प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब
आइसोथर्मल में डेल्टा एच 0 है, तो एडियाबेटिक में डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। और आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मली इंसुलेटेड नहीं रहती है, बट एडियाबेटिक प्रोसेस थर्मली इंसुलेटेड रहती है। After that, we are going to discuss the question for 2 marks. Distinguish between reversible and irreversible process. This question is also asked for 2 marks. In the board examination, it is asked several times. Distinguish between reversible and irreversible process. So 2 parts are made. First is reversible process. Second is irreversible process. Definition: the process in which driving force is infinitesimally greater than opposing force is called as reversible process. An irreversible process, the process in which driving force and opposing force differ in a large magnitude and it is unidirectional and cannot be reversed, called as the irreversible process. So the first point is of definition. In reversible process, driving force and opposing force are slightly infinitesimally greater. That's why the process can be reversed at any interval. But in irreversible process, the driving force and opposing force differing in large magnitude. That's why it is unidirectional and cannot be reversed. Hence, it is irreversible process. Point number 2. Reversible process is non-spontaneous process and irreversible process is spontaneous process. Irreversible process is non-spontaneous, it is not happening in nature naturally, but irreversible process is spontaneous. It happens in the nature automatically. That's why it is called as spontaneous. After that, reversible process is a hypothetical process. Hypothetical means it's an imaginary concept. It is not available. It is a theoretical concept. It is not happens in the nature. But irreversible process is a real and practical process. It is happening in the nature and available in the nature. We can observe it in the nature. After that, point number 4, maximum work can be obtained from such process, that is reversible process. So maximum work concept we will discuss in next video, but it is related with the reversible process. What happens? There is a driving force and opposing force are differing slightly. That's why less amount of energy goes waste. So work will be maximum. But maximum work cannot be obtained from such a irreversible process, because in irreversible process, driving force and opposing force are differing by much more quantity, much more magnitude. Therefore, it cannot be reversed, and hence work done is not maximum in irreversible, but it is maximum in the reversible process. And the last point, the equilibrium will attain at every step. As it is a reversible process, at every step you will get the equilibrium condition of balance. But in irreversible process, the equilibrium will obtain only at the end of the process. When process is end, at the end there is condition of balance in irreversible, but in reversible process at every stage you will get the equilibrium. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. हमें आज डिफरेंस देखना है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. इसके लिए कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं. उसका पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन का. ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर स्लाइटली और इनफाइनाइटली ग्रेटर देन. ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस है, तो उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं. वो कहाँ पे भी रिवर्स हो सकती है. इरिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए वो यूनिडायरेक्शनल रहती है और कहीं पे भी रिवर्स नहीं हो सकती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल. उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस. और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो नेचर में अवेलेबल है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. जैसे flow of water from higher level to lower level, flow of electricity from higher potential to lower potential, flow of heat from hotter body to colder body, and flow of gas from higher pressure to lower pressure. ये नेचर में है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस का थर्ड पॉइंट है, इट इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस. हाइपोथेटिकल यानी सिर्फ इमेजिन किया है, वास्तविक में इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं है. ऐसा कंसेप्ट लिया है कि ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस रहेगा, इतना कम डिफरेंस मेंटेन करने जाएंगे
वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, थियोरटिकल बोलते हैं। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये रियल है और प्रैक्टिकल है, तुम नेचर में उसको देख सकते हो और प्रैक्टिकली इसको तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसीलिए उसे कहते हैं रियल और प्रैक्टिकल। उसके बाद मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच अ प्रोसेस, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन मैक्सिमम रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत कम है। इसका मतलब वहां पे हमने 500 न्यूटन फोर्स लगाया और जरूरत है 499.99 की, तो हम लोगों ने जो फोर्स लगाया पूरा एक्यूरेट लगाया, थोड़ा सा 0.001 फोर्स वेस्ट गया, लेकिन वेस्टेज मटेरियल वेस्ट ऑफ फोर्स कम है, इसका मतलब वर्क क्या है? मैक्सिमम। वही हम अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो वहां पे मैक्सिमम वर्क कैन नॉट हैपन्स, बिकॉज वहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में, इसीलिए वर्क डन मैक्सिमम नहीं हो सकता है। वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पॉसिबल है? रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में ये पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट, द इक्विलिब्रियम विल अटेन एट एवरी स्टेप। इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेप वी विल गेट द इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ बैलेंस। कंडीशन ऑफ बैलेंस तुमको कहाँ पे भी मिल सकती है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस कहीं पे भी देखो तुम, वहां पे तुमको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम है, कंडीशन ऑफ बैलेंस, वो जब एंड होती है, एंड ऑफ द स्टेप, तभी मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हो गए डिफरेंस के पॉइंट्स, इसमें से कौन से भी 4 पॉइंट्स लेके तो भी you will get the 4 marks. So today we have discussed about the difference between isothermal process and adiabatic process, and reversible process and irreversible process. The next portion we will discuss in the next video. Thank you.